हेलो एवरीवन, क्रैक एजु चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। पूर्व क्लास रे आमे ओएसटीटी 2018 रे हितबा ओडिया एवं इंग्लिश रो कंपलसरी पेपर को करथिले। आज आमे सीडीपी और पेडागोजी रो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करबा। तो चलंतु आज रो प्रथम क्वेश्चन आरंभ करबा। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड। आमर जदि लास्ट स्टेप टीचिंग रो लास्ट स्टेप रे करा जाए सेटा को आमे कोन कहंती समेटिव। किंतु एठी कोन होइछ ना किछि पिला करचंती हमर जेहेतु इन ए पीरियड कहिछि तो जो माने फॉर्मेटिव भी मारिचंती तांकर भी ठीक हबो। तो जो माने सी आ डी ऑप्शन मारिथिबे से मानकर एटा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोटा यांक भितरु ऑब्जर्वेशन रो गोटे टूल नुहे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, अचीवमेंट टेस्ट, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट। कोटा है जीव ऑब्जर्वेशन रो टूल नुहे नुहे कहिछि तो अचीवमेंट टेस्ट गोटे ऑब्जर्वेशन रो टूल नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच द चाइल्ड इज नॉट एक्टिव। टीचर्स क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, होम टास्क डन गिवन बाय द टीचर, प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक, एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक। कोटा है जीव नॉट एक्टिव कहिछि तो टीचर्स क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। ऑप्शन ए इंट्रिंसिक, ऑप्शन बी एक्सट्रिंसिक, ऑप्शन सी नेचुरल, ऑप्शन डी कंडीशनल। कोटा है जीव इंट्रिंसिक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, blueprint is used in preparing the question paper because questions become easy and simple, different type of question find their places, subjectivity in evaluation is reduced, the evaluation become easy and error free. Kota is your correct answer, option B is the correct answer, different types of question find their places. Next question, which is not related to child centered education। या भितर कोटा आमर नॉट रिलेट कहिछि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रो नॉट रिलेट। टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, टीचर टीचेस थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड, द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ लर्निंग, द लर्निंग इज बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस। एगुड़ा तो सब ठीक अच्छी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टीचर टीचेस थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड रे हबनी हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गॉल्फर्स इंटेलिजेंस मॉडल व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेंटल प्रोसेस। ऑप्शन ए इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी सिंथेसिस, ऑप्शन सी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन डी कन्वर्जेंट थिंकिंग। कोटा है जीव सिंथेसिसटा गोटे मेंटल प्रोसेस रे जीवनी हमर हैला। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन द लर्नर becomes interested to ask question, memorizes the lesson by cramming, prepares himself for examination, his memorization and forgetting becomes equal. कोटा है जो करेक्ट आंसर, becomes interested to ask question है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did multilingual education starts in our state। को ईयर स्टार्ट होता multilingual education 2007 रू 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, who defined social development means the attaining of maturity in social setting। कोटा इज वेर करेक्ट आंसर, किए कहिथिले ईबी हरलक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज द चाइल्ड एंटर्स द पीक ऑफ गैंग एज। गैंग एज क्या कोटा कहला चाइल्डहुड एजटा जोटा कि 11 to 12 इयर्स एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म रो फादर किए विलियम जेम्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु व्यूड दैट ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विथ ग्रोथ एज वेल एज दोज changes in behavior that results from environmental situation। के कहिथिले क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is more important in development
डेवलपमेंट कोटा इंपोर्टेंट फिजिकल चेंजेस इन नर्वस सिस्टम मैच्यूरेशन ऑल ऑफ द एबव सब गुड़ा दरकार है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच स्टेजेस डज द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिगिन कही प्रीनाटल। नेक्स्ट क्वेश्चन एट व्हाट स्टेज अ चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अकॉर्डिंग टू पियाजेट। लॉजिकल थिंकिंग को स्टेज रुए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किंतु एठी जो माने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मारिजो से तांकर भी करेक्ट हो है तो यहाँ हो कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल बोथ सी एंड डी जो माने मारिथिबो से मानकर एटा करेक्ट। आ सिंबॉलिकटा हमर कोथरे नॉर्मली सिंबॉलिकटा प्री ऑपरेशनल आ लॉजिकल थिंकिंग कंक्रीट एंड फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टा हमर फॉर्मल रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स टा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कौन हम एटा हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एटा तो ठीक अच्छी डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस एटा भी ठीक अच्छी डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एटा भूल अच्छी है यहाँ ही आमर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फुट कोटा सेफालोकोडाल आउ सेंटर टू आउटवर्ड जोटा सेटा होची प्रोक्सिमो डिस्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड ऑन। कंस्ट्रक्टिविज्म टा हमर कोथरे डिपेंड हुएनी कहाँ पर डिपेंड करेनी एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड और जो मैंने एनवायरनमेंट मारिछ से मानकर भी करेक्ट अच्छे ये बोथ ए एंड सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट करेक्ट डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एटा करेक्ट अच्छी डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्म एटा ही भूल अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कोटा या भर कंटिन्यूअस प्रोसेस ग्रोथ भी कंटिन्यूअस नुहे आउ मोटिवेशन भी कंटिन्यूअस नुहे तो ए एंड डी दीटा एटा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग। एम्फासिस ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस एम्फासिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एम्फासिस ऑन सेल्फ लर्निंग एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग कोटा चाइल्ड सेंटरटा एम्फासिस करेनी हमर क्लासरूम टीचिंग को है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटर स्किल ड्राइंग सिंगिंग साइक्लिंग टाइप राइटिंग सिंगिंग रे हमर मोटर साइक्लिंग इन्वॉल्व न थाए है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन प्रेज प्राइज रिकॉग्निशन इंटरेस्ट तो यहाँ इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डन टू नो इफ अ चाइल्ड इज फिट फॉर एडमिशन इनटू क्लास भी थर्ड आई। जितेबाला आम गोटे चाइल्ड को एडमिशन करती गोटे नुआ क्लास रे तार आम प्लेसमेंट टेस्ट भी करती आ जो मैंने समेटिव मारिज से भी करेक्ट अच्छी कहीं क्लास एंड रे आम तो एग्जाम कराती ना तो सेटा समेटिव कहती तो ये बोथ ए एंड डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट लैंग्वेज शुड द टीचर यूज व्हाइल टीचिंग शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट सो एज टू मीट देयर लैंग्वेज प्रॉब्लम। शेड्यूल ट्राइब पिला पढ़ाई को मेथड फॉलो करेंगे पुपिल स्पोकन लैंग्वेज स्टैंडर्ड लैंग्वेज बुक लैंग्वेज बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए ब्लू प्रिंट कनसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशन आम तो सब जानते ब्लू प्रिंट कौन था गोटे ऑब्जेक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मापे और वेट करे आ वेट इज टू कंटेंट आ वेट इज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फास्टा ही ठीक अच्छे मोर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट ट्रू फॉल्स तो रिकॉग्निशन मैचिंग भी रिकॉग्निशन मल्टीपल चॉइस भी रिकॉग्निशन सेंटेंस कंप्लीट गोटे रिकॉग्निशन टाइप नुहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी पेडागोजी माने साइंस ऑफ टीचिंग एटा तो जानिछ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट रो कौन थाए हमर वैलिडिटी भी थाए रिलायबिलिटी भी थाए यूजेबिलिटी भी थाए फ्लेक्सिबिलिटी न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन which is not related with the objective of motives to energize the behavior to stabilize the behavior to stimulate the behavior to activate the behavior देख सब गुड़ा पॉजिटिव वर्ड अच्छी स्टेबिलाइज द बिहेवियर नुहे है नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is both quantitative and qualitative कोटा स्टडी एक्सपेरिमेंटेशन इवालुएशन ऑब्जर्वेशन कोटा इज द करेक्ट आंसर evaluation is the correct answer next question in what type of question the possibility of guessing is least कोथरे हमर गेस करवाटा लिस्ट हुए कंप्लीशन टाइप रे yes or no टाइप रे 4 ऑप्शन टाइप रे आंसरिंग इन ए सिंगल सेंटेंस कोथरे हमर गेसिंग करवाटा लिस्ट हुए 4 ऑप्शन टाइपटा हैला नेक्स्ट क्वेश्चन which method of evaluation is effective for assessment of both curricular and co-curricular achievement कोटा रही जो both curricular कही माने comprehensive next question which one is teacher centered teaching learning process teacher work as a facilitator एटा भी ठीक अच्छी teacher explain with the help of teaching learning material teacher तो supervise करिवेनी और टीचर हेल्प्स द लर्नर टू गेदर एक्सपीरियंस नहीं फास्ट एटा भी ठीक अच्छी आ बीटा भी ठीक अच्छे आमर टीएलएम को यूज करके टीचर एक्सप्लेन करती ना तो यहाँ बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्यूड बाय कोलबर्ग कम्स अंडर मोरल डेवलपमेंट आमर कौन कोलबर्गर तांकर केतरा लेवल थिला 3टा लेवल थिला गोटे हूँ प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल आउ पोस्ट कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल पुणी 6टा स्टेज आमर प्री कन्वेंशनल भितर कौन जाऊँगी ओबीडियंस पनिशमेंट आउ गोटे हूँ आमर इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज तापर कन्वेंशनल आमर जाऊँगी आमर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन आउ गोटे हूँ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आ पोस्ट कन्वेंशनलटा आमर सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट आउ गोटे हूँ यूनिवर्सल प्रिंसिपल प्री कन्वेंशनलटा आमर को स्टेज 0 ରୁ 9 इयर कन्वेंशनलटा आमर 10 ରୁ 15 पोस्ट कन्वेंशनलटा 16+ है तो कन्वेंशनल स्टेजटा आमर को स्टेज रे गला 2टा जो स्टेज 3rd और 4th रे गला ना तो करेक्ट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियसली to adjust his thinking to new situation who had given this definition intelligence is a general capacity of an individual के कहले स्टर्न ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ ग्रुप फैक्टर के कहले थॉर्नस्टन प्रीवियस ईयर भी पढ़ीला एटा गॉल्फ्राड होचंती एसओए मॉडल स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी है नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फ्रेड बिनेट बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री को कंट्री रू से बिलोंग करती फ्रांस नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइन द मेंटल एज से पूर्व पेडागोजी क्लास रे भी कही मेंटल एज आमर किए अल्फ्रेड बिनेट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड सिग्निफाई आईक्यू रो फॉर्मूला कौन मेंटल एज डिवाइडेड बाय chronological age into 100 option D is the correct answer next question adolescence is a period of stress and storm and strike which educationalist suggested this statement एटा एक्चुअली तुमरो ये क्वेश्चनटा तुमरो ग्रेस मिली थिला तो तुम माने कमेंट रे कहबो एटा किए कहिथिले हैला नेक्स्ट क्वेश्चन social changes during adolescence include adult like behavior एटा old like behavior अछि adult like behavior social change time रे हमरा एटा ही include थाए next question who defined learning to be a change in behavior as a result of experience के कहिथिले क्रॉन बैच आउ जने भी कहिथिले हमरो आउ जने कहिथिले हमरो
कोल्विन है ए आउ सी बोथ ए एंड सी जो मैंने भी करेंगे से मनकर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट टू रियलाइज one's own potentialities comes under self fulfillment माने self actualization। next question teachers nods and smiles comes under positive non verbal reinforcement है। next question the process of establishing a new fact from a given fact is known as deduction, induction, analog, imagery। process of establishing a new fact analog word है। next question if a test gives the same result repeatedly जो सेम रिजल्ट है को हम कौन कहबा रिलायबिलिटी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो पिला माने आज थिला हमरो पेडागोजी रो क्लास 2018 रो PYQ नेक्स्ट को आमे नेक्स्ट क्लास रे आमे 2019 रो ओडिया कंपलसरी पेपर इंग्लिश कंपलसरी पेपर पेडागोजी कंपलसरी पेपर आमे नहीं आसबा। तो जो मैंने भी चैनल रे नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु और जदि वीडियो टी भलो लागुची ताले लाइक कर दियंतु। रहउची जय जगन्नाथ।